Very logical morning to all of you. Welcome to another session जहाँ पे हम like I'm trying to cover the basics of attempting and preparing and deciding that how can you approach the CLAT examination paper. Being a very reading oriented exam, CLAT calls for an immense amount of reading and bang on reading skills and also vast knowledge of various topics. अगर आपका ये तीनों चीजें like bang on है, then be sure that you have prepared 50% of the CLAT reading section. रीडिंग सेक्शन पे इतना फोकस इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो इंग्लिश सेक्शन तो वैसे ही कवर्ड हो जाता है इफ यू हैव गुड रीडिंग स्किल्स. सेकेंड ऑफ ऑल, चूंकि द एंटायर पेपर इज अबाउट रीडिंग अ लॉट ऑफ पैसेजेस, सो दिस really helps to infer, to understand, to comprehend, to have a knowledge of the language. तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, पुअर रीडिंग स्किल्स, आई एम हियर. यस, आई एम पलक राजानी एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू fix your poor reading comprehension with just 7 wonderful ways. Right here, right now, I'll tell you ways and means, and together we will discover how to jumpstart, how to kickstart and improve your reading skills. So are you ready? Please don't forget to watch this video till the end, जहाँ पे हमने सब basics cover करे हैं about reading. So let's get started. All right. Strategies to improve reading comprehension skills. 7. जैसा कि मैंने मेंशन कर ही दिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 स्ट्रैटेजीज. ये कोई बुकिश स्ट्रैटेजीज नहीं है गाइस, दीज आर सिंपल लाइफ स्किल्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट, सिंपल वेज दैट यू कैन कैप्चर, दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर डेली रूटीन, simple things that you can follow to just prepare for reading sections, to just improve your reading skills. अगर आप इनको normally एक फ्लो ऑफ लाइफ में यूज करते हो तो कितना ही इजी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा दैट यू हैव लाइक प्रिपेयर्ड मोस्टली थ्रू वेरी इजी वेज एंड वेरी क्रिएटिव वेज. तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 से. इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. जब हम रीडिंग की बात करते हैं, एक चीज जो हमें हर कहीं स्टॉप करती है स्पीड रीडिंग करने में, रिमेंबर गाइस, CLAT calls for speed reading, not just reading but speed reading and inferring and comprehending at the same time. तो अगर आपकी vocabulary weak है, all throughout school हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम like we come across numerous words, but are we able to cover up those vocabulary words throughout the school? No, that's not an easy task and this is not something that everyone does. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी vocabulary कैसे improve कर सकते हो, उसके थोड़े से like we are going to discuss a few points. Alright, so knowing what words you are reading mean can improve your ability to comprehend the text. जब हमारी vocabulary एटलीस्ट स्विफ्ट होती है, हमारी रीडिंग इतनी स्किलफुल नहीं होती है, बट वी आर अवेयर ऑफ द वर्ड्स, तो उससे क्या होता है गाइस, हमारी थोड़ी सी स्पीड रीडिंग बढ़ जाती है. जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो वो वर्ड्स नोन होते हैं, वी आर अवेयर, तो वो हम थोड़ा स्पीड में पढ़ने लग जाते हैं. कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज रीड एज मच एज पॉसिबल. फर्स्ट ये था नोइंग वर्ड्स कैन इम्प्रूव, थोड़ी स्पीड हो जाती है रीडिंग में. नेक्स्ट इज रीड एज मच एज पॉसिबल. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये तो हमने कई बार सुना है, बट हैव वी एवर इम्प्लीमेंटेड? This is something new to you. If this is something new to you, if you are not fond of reading, please make books your best friends and please read as much as possible. Read newspapers, cover various sources. इसकी एक छोटी सी टिप दूंगी मैं, अगर आपको शुरू करना है रीडिंग तो उस चीज से करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो. अगर आपको हैरी पॉटर पसंद है, you can begin by reading Harry Potter. Your first step is just to kick start reading.
नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्राई टू कवर डिफरेंट जॉनर्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर रीडिंग स्किल को फिलहाल बढ़ाना है तो आप अपनी इंटरेस्ट की बुक से स्टार्ट करो. मोटिवेशनल, साईफाई, मिस्ट्री, फिक्शन, ये वाली बुक्स अगर आप स्टार्ट करते हो आपकी इंटरेस्ट के बेसिस पे, देन यू विल स्लोली ग्रेजुअली improve your reading speed. Make a list of unfamiliar words as you read and look them up for their meaning. कहीं भी आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें कोई एक वर्ड आ गया, इफ यू आर रीडिंग अ बुक, यू कम अक्रॉस अ वर्ड, you have to be sure that you make a list of those words, and on regular basis you go through those words, try to come up with the meaning on your own कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है based on context. This will help you build up your vocabulary and this will improve your comprehension skills also. Remember guys, make a point to use newly learned words verbally. Verbally means in conversation. कोई नया वर्ड आपने सुना, उसका मीनिंग देखा, फटाक से आप प्लीज उसका यूसेज कर लो कहीं पे. दिस इज गोइंग टू बी इन योर मेमोरी फॉर लॉन्गर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लर्न अ वर्ड, ओके, फ्यूरियस. Furious means when someone is very angry. So use that word in a sentence. Make a vocab buddy. Talk to them in by using new words. So this is going to gradually, in a few months or two, you will see improvement in your vocabulary. These are some basic life skills only guys, and you can just use these and implement these to build up your vocabulary. Learn through flashcards. बहुत सारी apps आ गई हैं आजकल guys. If you look through the app store, you will find vocabulary through flashcards, and you can very easily do this on your daily basis, while on the way, while whenever you have time on the go. It's very easy. Come up with questions about the text you are reading. इससे होगा क्या, जब आप कुछ पढ़ते हो, when you start questioning it, you stimulate your brain to understand it. जब आप क्वेश्चन करना चालू करते हो, it broadens your overall understanding. Every time you will read a passage, you will approach it differently. When you ask questions कि ये क्यों, ऑथर ने ऐसा क्यों किया, यार ये कैरेक्टर से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. So these questions, this curiosity that you have, this asking question वाला thing that you develop, it helps you in comprehension ultimately. Enables you to explore themes, motives and other components of the text. सिर्फ पढ़ के ही खत्म नहीं करना है. For example, if you are reading a book is very resourceful. So just reading a book and putting it aside, उससे कुछ नहीं होगा. अगर आप बुक से कुछ implement कर पाते हो, if you are able to relate, like I said, with the character, if you are able to relate with certain instances, so that is what calls for understanding and comprehending. Why did the author begin the book? कुछ questions जो आप पूछ सकते हो वो हैं, why did the author begin the book at this location? क्वेश्चन करो कि ये लोकेशन क्यों ली, किससे रिलेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऑथर नॉस्टैल्जिक होके कोई अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से बुक स्टार्ट कर रहा है, तो योर क्वेश्चनिंग कि व्हाई हैज द बुक स्टार्टेड ऑन दिस लोकेशन. तो ये एक तरीका होता है टू डेवलप योर कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट रिलेशनशिप डू दीज टू कैरेक्टर्स शेयर? Another question that you can ask is, what do we know about the main character? To this point in the book, जितनी भी book पढ़ ली, you can just point out to these levels. Use context clues. Now, context clues can be found in the words and sentences surrounding the word you aren't familiar with. Context clues बहुत भारी word लग रहा होगा, but ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है guys. When we read a book, the author is aware that you are maybe not a reader. So if the author is going to stuff the book with new words, you will eventually get bored और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा. So the author every now and then puts in some context clues. To use context clues, you can look for the nearby words. कुछ synonyms होते हैं, कुछ antonyms होते हैं, और आप उनसे meaning guess कर पाते हो. You can focus on the key phrases. Deduce the main idea. Key phrases and ideas in a sentence and deduce the main idea. Main idea समझना guys बहुत important है. It gives you overall idea कि what are you, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, इसकी भी थोड़ी सी हिंट अगर मेन आइडिया हो तो पता लग जाता है. इट बिल्ड्स अप क्यूरियोसिटी, इट बिल्ड्स अप कॉम्प्रिहेंशन. आई शेयर वन एग्जांपल विथ यू फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हिज एनिमोसिटी और हेट्रेड ऑफ हिज सिस्टर डिवाइडेड द फैमिली. अब एनिमोसिटी बीइंग द न्यू वर्ड. एनिमोसिटी इज व्हेन यू हैव एक्सट्रीम हेट्रेड फॉर समवन. तो वो न्यू वर्ड का मीनिंग हमको कैसे पता चले? सो ऑथर यूज दिस कॉन्टेक्स्ट क्लू.
animosity or hatred. So now you can easily guess the meaning of the word animosity. Another example, this situation is a conundrum. A conundrum क्या होता है? A puzzle that's difficult to solve. So the author has presented an example, a synonym clue then and there. तो ये काफी easy हो जाता है. So that is why I stress on book reading. You can start it pretty early in your journey to prepare for CLAT, because book reading can immensely help you with main idea, with inference, can build up your comprehension really strongly. Look for the main idea. So while we were discussing about the main idea, एक छोटा सा point ले लेते हैं main idea पे कि main idea पे इतना stress क्यों? When reading, pause at every few paragraphs and decipher what the main idea is, and then try to put it in your own words. When you read something, when you try to put it up in your own words, you can also do this exercise in front of a mirror. So when you put things in your own words, it eventually builds up your language, it eventually builds up your thinking level, it eventually builds up your comprehension. तो बात पूरी घूम फिर के एक ही चीज पे आती है कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है. सो दिस इज द ओनली वे. दीज आर वेरी सिंपल ट्रिक्स, दीज आर वेरी सिंपल वेज, बट हाउ मेनी ऑफ अस इम्प्लीमेंट? जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो चेंजेस देखेंगे. विद इन अ मंथ ऑफ विगरस रीडिंग, you will find changes in your vocab level, you will find changes in your reading speed. Do not forget, first step to CLAT is reading. Reading ही सब कुछ है. Reading से you can do wonders. You can cover various genres. So coming to guessing the main idea here, when you start reading every now and then थोड़ा pause लेके आप main idea को समझने की कोशिश करो. How is this going to help? ये character से क्या relate हुआ? ये इसमें क्या चल रहा है? All those questions are going to help you with inference. Identifying the main idea can help you identify the importance of the article. For example, आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपने पढ़ के छोड़ दिया, बट इफ यू रीड दैट आर्टिकल यू फाइंड आउट यार इसका मेन आइडिया क्या हो सकता है. मेन आइडिया एज इन मेनली ये किस पे फोकस है, क्योंकि हर आर्टिकल में 4 से 5 चीजें डिस्कस की हुई होती हैं, बट how many of us are able to identify that one core thing the article focuses on? This is something that comes with rigorous reading. Every now and then you should have a book in hand, every now and then you should be into newspapers. So इससे क्या होगा, automatically overnight नहीं होने वाला, but yes, it will gradually come. It will gradually come if you diligently do this practice. Let's go to point number 5. Write a summary of what you read. This is the best way, the best way I would say. कोई मूवी देख रहे हो, मूवी रिव्यू लिख लो. कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक रिव्यू लिख लो. कोई चीज आर्टिकल पढ़ रहे हो, 3 लाइन में उसका समरी लिख दो. If this doesn't build up your comprehension level, nothing else will. This is the most easiest way, simplest way. Build up an interest. मूवी देखकर लिखना सबसे easy. Book takes time, of course. If you watch a movie, write a movie review in your own words. When you write things, when you do things on your own, when you write things in your own words, you are मतलब आप कंपेल होते हो, आप फोर्स होते हो दैट यू यूज सर्टेन वर्ड्स एंड यू लुक अप फॉर वर्ड्स, देन यू ट्राई टू बिल्ड अप योर लैंग्वेज. तो समरी लिखने से मेन आइडिया का बहुत इजीली पता लगा सकते हैं हम. सो समरी इज लाइक, अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन यू समराइज समथिंग, इट्स द स्टार थिंग दैट यू कैन डू. Pretty amazing how you will develop identifying main ideas, identifying the gist of the passage is what helps here. Requires you to decide what is important in the text and then put it in your own words. अब ये another star point है. आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो कि ये पॉइंट नेसेसरी क्यों नहीं है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के एक समरी लिख देते हो. सो isn't this practice going to be helpful further? Of course, when you start solving the papers, आपको पता चल जाएगा कि कौन से options important है, कौन से options eliminate करने हैं. So writing summary is a star thing once again, guys, that you can do. It allows you to determine if you truly understand what you have read. Summarize हम करते हैं तो हम हमेशा important points लेकर ही करते हैं. तो अगर आपको कोई भी text, कोई article, passage समझ में आ गया है, तो आप important points लेके उसको फटाफट summarize कर पाओगे. So this is again a very helpful practice that I swear by. Number 6, break up the reading into smaller sections. As new readers, it can get monotonous and boring if you go by like
bunch of books every month. So you can break your reading into smaller sections, fix doable targets. ठीक है, जो आप एक दिन में कर सको उतने targets बनाओ. Then this should increase as you further approach your exam. Can make you feel less overwhelmed. Yes, please don't overwhelm yourself. उतना ही करो जितना आप ले पाओ. Getting overwhelmed or having something more that you can carry. So ये situation आपको panic कर सकती है. So always set doable targets. Like in a day I can read so and so number of pages in a book, or I can go for 5 articles today. So set up doable targets, doable goals, and give you a better chance of truly comprehending the information in the text. If you're going to stuff your brain with a lot of things, this is ultimately not going to help. For example, you could read 2 paragraphs at a time and then pause to quickly summarize what you just read in your mind. आप हर 2-3 पैराग्राफ के बाद एक पॉज लो, फटाफट उसको समराइज कर लो. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. आगे की बुक से, आगे की चैप्टर्स से कनेक्टिविटी भी आ जाती है. When you pause and you try to analyze things and find the main idea, so you have a good connectivity with the book. Last point is pace yourself. देखो, अल्टीमेटली रीडिंग तो इम्पॉर्टेंट है, बट क्लैट इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन स्पीड रीडिंग, हाउ क्विकली यू कैन सॉल्व अ गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस अंडर अ गिवन सेक्शन. सो नेवर फॉरगेट कि पेस, स्पीड हमारा टारगेट है. व्हेन यू बिगिन, रीडिंग पे फोकस करेंगे बिल्कुल, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेट रियलिस्टिक गोल्स for reading practice and habits. We are not just going to stick to one thing. Our goals should be clear, and that is हमें speed reading पे focus करना है. So poor comprehension के साथ अगर आपकी reading भी poor है, then you must start doing something right now. You must follow these 7 strategies which could do wonders in just a few days or just a month. So if you implement this, this is the only way to prepare comprehension. This is the only way to improve your comprehending skills. So setting realistic goals, something that is achievable in a day, is what will make you more confident and you will be able to comprehend easily. Set a goal for yourself, then that you know you can meet each day. जो एक दिन में कर सको उतना ही decide करना है. Don't just overwhelm yourself, like I already said. So setting realistic goals, achievable goals, doable goals is what is going to help you. Follow these effective tips and please subscribe our channel for more such videos where we share step-by-step preparation for CLAT. Okay, next time when you come back to our channel, I hope you follow these strategies. I would love to have reviews, so don't forget to comment. That is all for today. Hope you enjoyed this video. Stay logical.